Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 9th maths and our chapter is chapter 12, that is Heron's formula. Okay, in this chapter we learn how to find the area of triangle, any triangle. Okay, and when we want to find the area of a triangle, so we have some formulas. In our previous classes we learned some formulas, that is 1 by 2 base into height, and we know what is base and what is height, and base and height is given in right angle triangles. Okay, but if the triangle is not a right angle triangle, then if it is equilateral, so we have to draw a altitude or perpendicular from base to vertex to the base of the triangle, and then find the area of that triangle. Okay, and if the triangle is isosceles, then again we have to draw a perpendicular. Okay, and then we find the area of that triangle. Okay, but in if the triangle is scalar, so that is some टिपिकल मीन्स थोड़ा टिपिकल हो जाता है, हम उसको कैसे फाइंड करेंगे. ओके, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट triangle. So when we want to find the area of that type of triangle, it is easy with this formula, that is Heron's formula. Okay, so this is Heron's give this formula for. And in earlier classes, we have studied about the area of and perimeter of some specific triangle and quadrilaterals. Example: equilateral triangle, right angle triangle, or square, trapezium, etc. Okay, in this chapter, we will study about the area and perimeter of specific and non-specific both the triangles. Okay, and their application used in quadrilateral by using Heron's formula. Okay, now triangle. What is triangle? A plane figure bounded by three line segment is called a triangle. Okay, if the plane figure is bounded with three line segments, so we can say that it's a triangle. And in a triangle, we know that there are total 6 elements, means the triangle having 3 vertices, 3 sides and 3 angles also. Okay, so the total space inside the boundary of the triangle is called the area of the triangle. Area is measured in term of square unit. We know that. Let's discuss about the area of various type of triangle. Okay, and if we want to find the area of right angle triangle, so we know that what is the area of right angle triangle? 1 by 2 base into height. Okay, understand. And what is the area of equilateral triangle? So area of equilateral triangle is equal to root 3 upon 4 a square, where, okay, understand, where a is the height of same side. अगर जो equilateral triangle है, where a is the side of the triangle. Okay, so what is the area of equilateral triangle? Root 3 upon 4 a square. Okay, understand. So, and if the triangle is isosceles, then what is the area of that type of triangle? Area of isosceles triangle is a into a root 4b square minus a square upon 4 square unit. Okay, understand. So this is the formula for isosceles triangle. If the triangle is isosceles, see, हम कौन कौन से फॉर्मूले देख रहे हैं यहाँ पर. हमने यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले देखे. फर्स्ट, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 by 2 बेस इंटू हाइट. ओके, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर. ओके, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, देन आवर फॉर्मूला इज, राइट इट डाउन. इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में
Okay, and isosceles, so our formula is a root 4b square minus a square upon 4, where what is b? A is the same side, जो सेम साइड्स होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, a is the same side and b is the base of the that triangle. Okay, understand? So this way you can find where b is the length of equal side and a is the length of third side. ओके, ए जो है वो थर्ड साइड की लेंथ है और बी जो है वो आपकी इक्वल साइड की लेंथ है. ओके, अंडरस्टैंड? सो यू कैन फाइंड डिफरेंट वे. हमें हमारे पास में हर एक टाइप के ट्रायंगल के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता था. ओके, सो हेरोन्स ने क्या किया? हेरोन्स इज गिविंग अ फॉर्मूला टू फॉर फाइंडिंग अ एरिया ऑफ ट्रायंगल. So till now we were finding the area of some special triangle, जैसे right angle triangle, equilateral triangle, isosceles triangle. The question arise, can we find the area of a scalene triangle? Suppose you know the length of three sides of a scalene triangle and not the height. Okay, so can you still find its area? To find the area of triangle we need its height, and there is no method to find out the height of such a triangle. इस टाइप के ट्रायंगल की हाइट फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है. सो हेरोन्स derived a formula for finding the area of any triangle, okay, including scalene triangle, which is known as Heron's formula. Okay, Heron's derived a formula for finding the area of any triangle including scalene triangle, which is known as Heron's formula. Okay, and what is the Heron's formula? See, Heron's formula says area of triangle is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c, where a, b and c are the side of a triangle. Whatever the triangle, see, वो इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल में ए बी सी क्या है? साइड ऑफ अ ट्रायंगल. एंड एस, व्हाट अबाउट एस? एस इज द सेमी पैरामीटर. Okay, understand? So yesterday we have talk about it. जो s क्या है? सेमी पैरामीटर है. एंड हाउ टू फाइंड द s? a plus b plus c means थ्री sum of three sides upon 2 is the semi parameter. Okay, understand? So the formula given by Heron's for finding the area of triangle is known as Heron's formula. This formula can be used for any triangle to calculate its area, and it is very helpful when it is not possible to find the height of the triangle easily. Okay, Heron's formula is generally used for calculating area of scalene triangles. Okay, understand? So Heron's formula हम कहाँ use करते हैं? Generally we use for scalene triangle. Okay, and where s is the semi parameter of the triangle. Okay, understand? Now let's see some questions. See the question number 1 in exercise 12.1. What about question number 1? First of all, read it carefully. The question number 1 say us a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. Which side? A. Find the area of the signal board using Heron's formula if its parameter is 180 centimeter. Now it's an equilateral triangle and parameter is also given. So how to find the area of that equilateral triangle? Okay, so first of all, what is given? Parameter is given. Okay, if the parameter is given, so what we can do? We know that what is the parameter of triangle? Parameter is equal to a plus b plus c. Okay, and here is a triangle is equilateral, so a is equal to b is equal to c. So we can write it p is equal to a plus a means p is equal to 3a. And what is the value of p is given?
P is given, that is 180 centimeter is equal to 3A. So A is equal to 180 upon 3. So what is the value of A? साइड की वैल्यू क्या आ गई? 60 सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड. So you can easily find the value of the side. Okay, so value of side is 60 centimeter. Now if you want to find the area of the signal board, okay, so there are two method. First method जो हमने बोला √3/4 into side square. Okay, so this is the formula for finding equilateral area of equilateral triangle. Okay, so हम दोनों फॉर्मूले से फाइंड करके देखेंगे. अगर हमारे पास में फॉर्मूला है √3/4 A square. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? A means 60 into 60. Okay, so your answer is 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, सो आवर आंसर इज 900 मीटर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड. एंड इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो व्हाट इज द एरिया? सपोज हमारा जो पैरामीटर आया था, पैरामीटर हमारा आया है 3A/2. ओके, पैरामीटर हमारा क्या था? 3A. सो S क्या हो जाएगा? P/2. पैरामीटर/2 मीन्स 3A/2. ओके, सो सी, अगर हम इसमें फाइंड करना चाहते हैं, हैंस एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड विथ साइड A बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इज √3/4 A square. Okay, so now it's if the parameter of traffic signal is 180 centimeter, then जब हम उसको निकालेंगे, सो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है, हेरोन्स फॉर्मूले से हमने ये निकाला है. जो हमारा √3/4 आया है वो कैसे आया है वो यहाँ पर देखिए आप लोग. ओके, सो अब हम इसको निकालते हैं. हमारा S आ गया. सो व्हाट इज द हेरोन्स फॉर्मूला टू फाइंडिंग एरिया? S minus A, S minus B, S minus C. S is 3A/2, 3A/2 minus A, 3A/2 minus A, and 3A/2 minus A, because A is equal to B is equal to C, because triangle is equilateral triangle. Okay, so here what we see here, so we get 3A/2 into 3A में से 2A माइनस होंगे तो A/2 बचेगा. अगेन A/2, अगेन A/2. कितने हो गए? 1 2 3 4. 4 A हैं और 4 2 हैं. ओके, सो आवर आंसर इज, यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं? A के 2 पेयर बन रहे हैं और 2 के भी 2 पेयर बन रहे हैं. सो आवर आंसर इज √3A square upon 4. So this is our formula for finding the area of any equilateral triangle. Okay, understand? So first of all पैरामीटर हमें पता है, पैरामीटर से हम उसको क्या फाइंड कर लेंगे? साइड फाइंड करेंगे, एंड we will find the area of the equilateral triangle. Okay, understand? Now see, the triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. Okay, the advertisement yelled an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? So for this question what we can do here, let the side of the wall, हमें साइड वॉल का साइड पता नहीं है. सो अगर हमने साइड ऑफ द वॉल अगर हमने A लिया, सो A इज इक्वल टू 120, B इज इक्वल टू, हमने उसको ABC ले लिया. A इज इक्वल टू 122 मीटर,
बी इज इक्वल टू 22 एंड सी इज इक्वल टू, और वॉल कैसी है, ट्रैंगुलर है. ओके, इफ द वॉल इज ट्रैंगुलर, सो हमने उसकी साइड्स ले ली. अब उसका पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. सो व्हाट इज अवर आंसर, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2. ओके, सो यू कैन गेट 264 अपॉन 2. ओके, so what is semi parameter, 132 मीटर. ओके, नाउ एरिया द फॉर्मूला, अब फॉर्मूले में पुट कर लेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. आपके पास सारी वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है. ओके, यू कैन पुट द वैल्यूज एंड राइट द आंसर. ओके, अंडरस्टैंड. अब जो आंसर आएगा आपको क्या करना है, उसमें गिवन अर्निंग ऑफ 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर स्क्वायर का आपको कितना दे रहे हैं आप, 5000. ओके, सो 1 मीटर स्क्वायर का अगर 5000 दे रहे हैं तो आपका जितना आया उसके लिए पर ईयर का पहले निकालेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 12 करेंगे. डिवाइडेड बाय 12 करने पर आपको 1 मंथ का मिलेगा. ओके, एंड देन जो 1 मंथ का आएगा उसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2. Okay, student. Now question number 3 is, what is there is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area प्रिंटेड इन कलर. ओके, सो हमें पता करना है कि उसका एरिया कितना होगा. वी नो व्हाट इज द साइड ऑफ द वॉल्स. ओके, हियर एरिया पेंटेड इन कलर will be equal to the area of triangle with side 15 meter, 11 meter and 6 meter. Okay, understand. So let given side of the wall be A is equal to 15 meter, B is equal to 11 meter and C is equal to 6 meter. Okay, so let the given side of the wall is, हमने पहले S find कर लेंगे A plus B plus C से. Okay, so let's find A plus B plus C. Okay, so what is your answer, 15 plus 11 plus 6 upon 2. Okay, so you can get 32 upon 2, that is 16 meter. So आपका S कितना आ गया, 16 meter. ABC is given. So first of all you will find area of a triangle. Root S into S minus A, S minus B and S minus C. Okay, what is the value of S, that is 16. 16 minus 15, 16 minus 11 and 16 minus 6. Okay, so you can get 16 into 1 into 5 into 10. ओके, सो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2. सो 4 एंड 5 आपका बाहर निकल जाएगा. सो योर आंसर इज 20√2. व्हाट इज योर आंसर, 20√2 मीटर स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो. नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. Find the area of triangle side, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and the parameter is given. Okay, that is 42 centimeter. Now parameter is, if the parameter is given, so you can easily find the third side of the triangle. Okay, what is the formula for third side, A plus B plus C. If A is 18 and B is 10, so put it the value 18 plus 10 plus C, and what is parameter, that is 42. Okay, so this 28 plus C, 42 minus 28 is equal to C. Okay, 48 minus 22 is equal to C, so C is equal to 14. Okay, when you subtract 42 minus 22, so you get
14. Okay, so your third side is 14. Now parameter S, you know what is S? S is equal to P upon 2. So S is equal to P upon 2. What is P? P is 42. तो 42 upon 2 that is 21. ओके, सो अब आपको तीनों साइड भी पता चल गई और एस भी पता चल गया है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ओके, अंडरस्टैंड. सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ side of a triangle is given in the ratio 12:17:25. Okay, and perimeter is also given. So first of all you have to find the side of the perimeter, side of the triangle. Okay, so let the side will be 12x plus 17x plus 25x is equal to, what is the parameter? 540. Okay, when you add all of these, so you can get 54x is equal to 540. So x is equal to 540 upon 10. You can get x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10. So अब आपको तीनों साइड्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. That is 12x. 12x means 12 into 10. That is 120. Okay, then 17x. 17 into 10, that is 170, and 25x, 25 into 10, that is 250. Okay, now अब आपको ABC पता है and you have find S. S is equal to P upon 2. What is P? P is 4 upon 2. So you can easily find the value of S, that is 270. Okay, now you can put the value in the formula and find the area of the triangle. Okay, understand. Now question number 6. See, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is. See student, that application of Heron's formula in finding area of quadrilateral. Okay, this thing is not in our syllabus, I think. Just a minute, I am seeing. I will see. Yes, application of Heron's formula in finding the area of a quadrilateral is deleted from your syllabus. This year के syllabus से ये delete हो गया है. Okay, so let's see. हम एक दो क्वेश्चन इसमें से करेंगे, अदरवाइज आपको हेरोन्स फार्मूला का हमारा जो रिवीजन है वो हम करवाएंगे. ओके, अंडरस्टैंड. So you know what is Heron's formula? That is root S, S minus A, S minus B and S minus C, where S is the semi-parameter and A, B, C are the side of the triangle. Okay, so complete this question in your notebook. Okay, have a good day.